going to translate? Somebody coming. Somebody? Maybe Mansidari. From Sidari? Yeah. Yesterday he did. He was yesterday translating. Who plays Midranga? One Midranga, one Kadas. Simple, Prabhupada beat, always. Prabhupada liked that beat. One time we were recording in Germany. You speak English? Yes. We were recording with Prabhupada, and it became later Krishna meditation album. And our Hansadutta was playing. Then Prabhupada said, stopped him. He said, "You don't know how to play?" He said, "Well, I know." And Prabhupada said, "Play this. Give me the Midranga and play." That one. He said, "Play like that." Loud. Govindana Bala
Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare once more. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Bol, Hare Nitai Bol, Hare Krishna. Thank you very much. Always nice to sing kirtan. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I need some more. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I use my computer.
put my computer here. Leave it. Keep here, it's good. I can read my computer like this. What happened to that spectacle? It's pocket. There's a mouse. Where's the mouse? This. This is good. It's good enough. Good. It's good enough. Yeah. Okay. Gaur? Gaur? First word is Gaur? No? What is the first word? Brahma? Brahma Tad? Brahma. 19, huh? Yes. Brahma Tad Upadayata. Brahma Tat Upadayata. Sadivaistaya Saha. Jagama Satrinayanas. Tiram Shira Payonidhe. Brahma Tat Upadayata. Sadivaistaya Tayasa Jagama Satrinayanas Tiram Kshira Payonidhe Brahma Tat Upadayutta Sadivaistaya Saha Jagama Satrinayanas Tiram Kshira Payonidhe. All right, somebody, please. Brahma Tadupadayata. Sahadeve Saya Saha. Jagama Sakinayana. Tiram Kshira Payonidhe. Brahma Tadupadayata. Brahma, Lord Brahma, Tat Upadaya,
understanding everything rightly. Ata, thereafter. Saha, with. Devai, the demigods. Taya, Saha, with Mother Earth. Jagama, approached. Satrinyana, is Lord Shiva who has three eyes. Tiram, the shore. Kshira Payanidhe, of the ocean of milk. Thereafter, having heard the distress of Mother Earth, Lord Brahma, with Mother Earth, Lord Shiva and the all other demigods approached the shore of the ocean of milk. Who's translating? माता पृथ्वी की विपदा सुनकर ब्रह्मा जी, माता पृथ्वी तथा शिव जी एवं अन्य समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर जा पहुंचे. Okay. After Lord Brahma, purport by Srila Prabhupada, after Lord Brahma understood the precarious condition of the earth, he first visited demigods headed by Lord Indra, who are in charge of the various affairs of this universe, and Lord Shiva is responsible for annihilation. Both maintenance and annihilation go on perpetually under the order of the Supreme Personality of Godhead. As stated in Bhagavad Gita, Paritranaya Sadhunam Shanas Vinashaya Taduskitam, those who are obedient to the laws of God are protected by different servants of the demigods. Whereas those who are undesirable are vanquished by Lord Shiva, Lord Brahma, Lord Shiva. Lord Brahma first met the demigods, including Lord Shiva. Then along with Mother Earth, they went to the shore of the ocean of milk, where Lord Vishnu lies on a white island, Svetadweep. Om Gyanti Minandasya Gnanjana Shalakaya Chakshun Ominitam Mina Tasmai Sigurave Namaha Sri Chaitanya Manovishtam Stapitam Mina Bhutale Swayam Rupa Mahiraka Tadati Swapanantikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaur Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama. तात्पर्य. जब ब्रह्मा जी पृथ्वी की संकटमय स्थिति को समझ गए तो सबसे पहले वे इस ब्रह्मांड के विविध कार्यों का भार संभालने वाले भगवान इंद्र तथा संहार के लिए उत्तरदायी शिव जी के पास गए. सृजन और संहार कार्य भगवान के आदेश अनुसार निरंतर चलता रहता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां. जो लोग ईश्वर के नियम का पालन करने वाले हैं, उनकी रक्षा विभिन्न सेवकों तथा देवताओं द्वारा की जाती है, किंतु जो अवांछित है शिव जी उनका संहार कर देते हैं. सर्वप्रथम ब्रह्मा जी शिव जी समेत सारे देवताओं से मिले. तब माता पृथ्वी को साथ लेकर वे क्षीर सागर के किनारे गए, जहाँ विष्णु भगवान श्वेत द्वीप में शयन करते हैं. Hare Krishna. So, in the commentary of Vishwanath Chakravarti of the verse 17, 2 verses before, there is a thing I never heard in my life, and I don't know how to process it actually, that when the earth personified approached Brahma seated on the peak of mountain, this was not the Brahma of Satyaloka. I never heard that there are two Brahmas. There's one seated on Meru mountain. Mount Meru you can visit. It's north of Kedarnath. By air, maybe half an hour. Not far. You can go there. But what do you see? Nothing. यहाँ पर श्लोक नंबर जो 17 है, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, टीका में लिखते हैं कि कोई एक और ब्रह्मा है कि जो है एक तो श्वेत द्वीप पर गए थे. In the same way, जो मेरू पर्वत के ऊपर रहते हैं. So this is in Himachal. This is still, I think, Aruna Pradesh or Himachal Pradesh. It's in India, the Meru mountain. Then you can go also to Mount Kailash, which is, according to scripture, the seat of Lord Shiva. तो मेरू पर्वत के आगे कैलाश पर्वत है, जहाँ पर शिव जी वास करते हैं.
And what do you see? Nothing. आप क्या देख सकते हैं? हम कुछ भी देख नहीं सकते हैं। You see a very beautiful mountain. आप एक सुंदर पहाड़ देख सकते हैं। Top is snow covered. Top is covered with snow. Top is covered with snow. हाँ। जो बर्फ से घिरा हुआ है। And various ISKCON acharyas have visited. Satyananda Swami went, Indra Ramana Maharaj went, they circumambulated. And what did they see? What I see when I go on YouTube. कई लोग वहाँ पर गए हैं और कभी आप वीडियो देख सकते हैं कि वहाँ से बर्फ है। I mean, with Google Earth, you can actually circumambulate Kailash mountain. Complete circumambulation you can do. Very cold there. You can have darshan from all sides where you're very comfortably sitting in the warm weather of Gujarat. And what do you see? Just a mountain. But the truth is, the actual reality is, that this mountain is just a sitting place of a banyan tree which is 800 miles high and 800 miles wide. तो वहाँ पर है एक बहुत बड़ा वृक्ष है जो 800 माइल का ऊंचा है, उसका चौड़ा भी। And Lord Shiva is sitting under this tree with great gravity. और वहाँ पर शिव जी है, बहुत सारे ऋषि योगों के साथ। And the Kumaras are there. Kumaras are there. Four Kumaras. चार कुमार भी वहाँ बैठे हैं। And there are beautiful waterfalls, there are beautiful gardens, there's a celestial landscape. वहाँ पर है स्वर्गीय वातावरण रहता है, झरने हैं, बगीचे हैं। That actually is a reality. और वो एक वास्तविकता है। Of that reality we see only very little. We see only very little. Human beings have no access to the actual full-fledged reality of Mount Kailash or Mount Meru. तो मनुष्य है वो कैलाश पर्वत की वास्तविकता है, उसका पूरा दर्शन नहीं कर सकता है। We are restricted. हमें वहाँ रोका जाता है। Our access is restricted. हमारा जो वहाँ प्रवेश है वो निषेध है। Just like when you work in a big company, you get a key card. जब एक आप बड़ी कंपनी में जाते हैं तो आपको एंट्री पास मिलता है। Right? Every worker gets it. So you can access the shop floor where the work was going on. You can access the canteen where food is served. You can access the bathroom, but you cannot go to higher management. The guys on higher management have the same card, looks the same, but they can open the access to higher management, engineering, accountancy, etc. वहाँ पर हमें जो प्रवेश के लिए एक पास मिलता है तो उससे हम है कैंटीन में जा सकते हैं, बाथरूम में जा सकते हैं। पर वहाँ जो टॉप मैनेजमेंट है व्यवस्था उनके पास ऐसे ही पास होता है, पर उससे वो और भी कई जगह पर जा सकते हैं उसी कंपनी में, हम नहीं जा सकते। And if you're a bigger man in the company, you have the same card, but with this card you can open the board of directors. तो वहाँ पर जो अगर आप मैनेजमेंट में सबसे ऊपर है तो आप उस कार्ड के द्वारा है डायरेक्टर की ऑफिस भी खोल सकते हैं। And if you're the top managers, you can open the penthouse where the director is sitting. और वहाँ पर आप पेंटहाउस से उसको भी खोल पाएंगे जहाँ पर डायरेक्टर बैठता है। So even in the material world, there's accessibility according to qualification. तो हम संसार में देखते हैं कि यहाँ पर भी योग्यता के अनुसार है आपको प्रवेश मिलता है। We have to be qualified. People say, I want to see God. But you're not qualified. You have a lifestyle of a pig. How can you see God? तो इस संसार में भी हमें योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है कोई बड़े व्यक्ति को मिलने के लिए, तो भगवान के दर्शन के लिए भी योग्यता आवश्यक है। Just like why should the top director associate with the common people in the factory? He doesn't. तो सामान्य व्यक्ति है डायरेक्टर को देख भी नहीं सकते हैं। This access is restricted to the top-notch people. तो ये जो है उनका संपर्क करना सब बड़े-बड़े लोग ही उनका संपर्क कर पाते हैं। In the same way, you can say, I want to see Mr. Modi. जैसे आप कह सकते हैं कि मैं श्रीमान मोदी को मिलना चाहता हूँ। And what's your qualification to see Mr. Modi? तो उसके लिए भी कुछ योग्यता चाहिए।
So everything depends on qualification. तो हर वस्तु निर्भर है कि आपकी योग्यता क्या है। And human beings have access only to a certain degree of reality. तो मनुष्य है वो वास्तविकता की कुछ स्तर का ही अनुभव कर सकता है। Like the moon, in reality, is a heavenly planet. जैसे कि चंद्र है वो स्वर्ग का ग्रह है। It's beautiful. There's waterfalls and gardens and animals and flowers and it is a celestial atmosphere. तो चंद्रमा पर स्वर्गीय वातावरण रहता है जहाँ पर फुव्वारे हैं, बगीचे हैं और झरने हैं और पुष्प है, सब कुछ। That's the reality. ये वास्तविकता है। But even if you go there by spaceship, what do we see? अगर हम स्पेसशिप के द्वारा चंद्र पर पहुँच जाएंगे तो क्या देखेंगे? Nothing. हमें कुछ वहाँ दिखाई Just some rocks. सिर्फ हमें वहाँ पत्थर दिखाई देंगे। That's all. बस यही। People can even bring some of these rocks. और आप वहाँ से पत्थर भी ला सकते हैं। At least they claim so. और ऐसा वैज्ञानिक बोलते हैं। Like in America, if you go to Washington City, there's an American Air and Space Museum. तो अमेरिका में वॉशिंगटन सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर एक संग्रहालय है। And you can see the moon rocks. और वहाँ पर आप चंद्रमा के जो पत्थर है उसको देख सकते हैं। There's a huge queue of people waiting तो वहाँ पर बहुत लंबी कतार होती है to see the moon rocks. चंद्रमा के पत्थर को देखने के लिए। They're in a glass box. वो एक ग्लास के पेटी में रखे And everybody goes and pays respect, सब लोग जाकर वहाँ प्रणाम करते हैं। pays his humble obeisance to the rocks. Because they have no discretion. They have no discretion. We don't pay respect to rocks, we pay respect to Krishna and to great Vaishnavas and to Lord Chaitanya, but not to some rocks from some other planet. तो हम है चैतन्य महाप्रभु भगवान को भक्तों को है आदर देते हैं, वही उससे ग्रह के पत्थरों को नहीं देते हैं। Thus see with all our material knowledge how foolish we are. तो ये भौतिक ज्ञान है वो मूर्खों के लिए। Murk. Nam prakasha sarvasya, I'm completely hidden. Yoga maya samamavitaha, by my yoga maya mudo yam nami janati. Fools cannot see me, nor they can see the celestial atmosphere of the moon, nor can they see the reality of Mount Meru. They can't. तो जैसे भगवान कहते हैं कि योग माया समावृता, तो जो मूर्ख है वो उसकी आंखें ढकी रहती है, वो ना ही तो चंद्रमा की वास्तविकता को देख सकता, ना ही मेरू है उसकी वास्तविकता को देख सकता। Only Krishna says, only by undivided devotion can I be seen as I am. तो अविचल भक्ति के द्वारा ही मुझे जैसा मैं हूँ ऐसा समझा जा सकता है। I remember there was this, yesterday I was talking about this one guru, a young boy from India who claimed to be Lord Krishna himself, and he danced in the aerodrome of Houston, the Rasa dance. I was talking about him. और जैसे मैं प्रवचन में बात करते थे, कोई एक युवक है कि जो अपने आप को कृष्ण का अवतार कहता है और वो कहीं एयरपोर्ट में वहाँ पर नाचता था। And so my friend, my best friend joined, while I joined Hare Krishna, he joined the Divine Light mission. He joined his mission. तो मैं जब हरे कृष्ण में जुड़ा तो मेरा जो मित्र है वो उस संस्था में जुड़ा। And we were arguing day and night. We were arguing day and night. So I said, if your guru is God, he should be able to show me the universal form. तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारे गुरु अगर भगवान है तो वो मुझे विश्व रूप दिखाने के लिए योग्य सक्षम होने चाहिए। I said, when are you going to see him? तो आप कब उसको मिलेंगे? Said, in 2 weeks. तो 2 हफ्ते में मैं मिलूंगा। In New York. न्यूयॉर्क में। I said, I want to write a letter. Give him the letter. तो मुझे भी आने दो। So I wrote a letter, my dear Guru Maharaji. You say you're God. Can you show me a universal form? तो उसने एक पत्र लिखा कि गुरुजी आप भगवान हैं तो आप अपना विश्व रूप क्या दिखा सकते हैं? And he told my friend, yes, certainly I can show my universal form, but I have to give him the eyes to see it. कहा कि मैं अपना विश्व रूप दिखा सकता हूँ, पर तुम्हें ऐसी आंखें होनी चाहिए, तुम्हारे पास ऐसी आंखें होनी चाहिए। He was such a rascal. वो ऐसा बदमाश था। And later he got married to, he fell down with his secretary and became a materialist in the material world. There's all the hundreds and thousands of people following him to nothing.
तो बाद में वो अपने सेक्रेटरी के साथ उसने विवाह कर लिया और उसका भक्ति से पतन मतलब साधना से पतन हो गया और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। So you see, the world is full of fools and rascals. तो ये पूरा जो संसार है उसमें बहुत सारे बदमाश और मूर्ख हैं। One time Prabhupada was asked by one Indian man, Swamiji, can you show me such and such? Do you know such and such? Swami. कोई आकर बोलता है प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद आप उस फलाने स्वामी को जानते हैं? Yes, in South Indian, famous man, God-man, hair like this, you know. हाँ, तो दक्षिण भारत में एक बड़े बाल वाले बाबा जी थे। So in any way, Prabhupada said, what is his philosophy? तो प्रभुपाद जी कहा कि उनकी फिलोसफी क्या है, तत्वज्ञान क्या है? The man said, Swamiji, he says he is God. तो कहा साथ में कहा कि वो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। Prabhupada said, oh, I want to see God. You have a picture of God? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं तो फिर भगवान को देखना चाहूँगा। Yes, I have. Yes. जो चित्र दिखाओ। So the Indian man showed Prabhupada the picture तो स्वामी जी का चित्र उन्होंने दिखाया। of the Guru. तो गुरु के बड़े बाल And थे। Prabhupada said, that's not God, that's an ugly old man. तो प्रभुपाद ने कहा कि ये भगवान थोड़े हैं, ये तो एक बूढ़ा आदमी है। Advaitam Achyutim Anadim Anantarupam Adyam Purana Nava Yovanam Sri Krishna is always young. तो भगवान तो हमेशा नवयौवन रहते हैं और एक बूढ़ा आदमी है। This is not Krishna, forget about this man. तो ये कोई भगवान नहीं है, ये इसको भूल जाओ। So Prabhupada had a very elegant way of criticizing people. तो प्रभुपाद जी का वो क्या भी करना था तो बहुत अच्छे So तरीके से कर लेते। we have to adjust ourselves to the idea that by observation and by research we can understand reality only to a certain degree. तो हमें समझना होगा कि हम जो रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके द्वारा हम वास्तविकता को कुछ तक ही समझ सकते हैं। Like if you have a mouse living in the ISKCON Hare Krishna temple in Baroda, तो एक चूहा अगर यहाँ मंदिर में रहता है, she may run around here, तो यहाँ पर वो इधर-उधर दौड़ता रहेगा। she may even run on the altar. और ऊपर भी वो चढ़ जाएगा। What does she see? तो उसको क्या दिखाई देगा? Very little. उसको थोड़ा सा दिखाई देगा। I remember I one time went to, what was this place? Sri Rangam. हाँ, तो मैं एक बार श्रीरंगम गया था। And the history is that Lord Chaitanya stayed in the house of the head pujari there for some time. तो वहाँ पर है चैतन्य महाप्रभु जो मुख्य पुजारी उनके घर पर रहे थे। That man went later to Vrindavan and became Gopabhata Goswami. तो वो व्यक्ति है बाद में वृंदावन में गया गोपाल। So there is a connection within Vaishnavism and Sri Rangaji. तो श्रीरंगम और वैष्णव। So based on this connection, we can actually approach the descendants of this Pujari, and he will put us right in front to see Rangaji, in front of hundreds and thousands of people waiting for hours. We go right in front. हाँ, तो हम उसके जो वंशज ढूंढ सकते हैं। So I went in front with him and I saw there was a cat sitting beside the altar like this. तो श्रीरंगम में तो मैंने देखा कि वहाँ ऑल्टर के साथ बाद में एक बिल्ली बैठी थी। I said, a cat on the altar. Do you see that? तो मैंने कहा कि बिल्ली वहाँ बैठी आप देखा आपको दिखाई देता है? He said, yes, this is Rangaji's cat. हाँ, तो उन्होंने कहा हाँ दिखाई देता है। This is Rangaji's cat. तो ये जो रंगनाथन की बिल्ली है। The cat knows that in 2 minutes there is offering. हाँ, तो ये बिल्ली को पता है कि 2 मिनट में ऑफरिंग होने So वाली in है। time for offering, she sits there, makes sure no mice come on the altar. तो वो वहाँ बैठती है और देखती है कि कोई भी वहाँ चूहा ना आए। And after the offering is off the altar, the cat disappears. और जब ऑफरिंग हो जाती है तो उसके बाद वो बिल्ली चली जाती है। So the mice cannot understand that they are trying to take the food. का मूर्ति है, एक भगवान है। In the same way, materialistic people cannot understand God or even the devotees of God. तो भौतिकवादी व्यक्ति है भगवान या भगवान के भक्तों को नहीं समझ सकते। Like myself, I'm now, my body is 77 years old, and I'm practicing Krishna consciousness since a long time. Last year I walked in Germany on the street, in the morning, chanting my japa in my dhoti.
तो मैं अभी 77 साल का हूँ और मैं कुछ समय पहले जर्मनी में था और वहाँ पर मैं माला सुबह सुबह कर रहा था, धोती कुर्ता मैंने पहना था। And so taxi driver drove by, turned down the window, तो वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर आया और उसने अपना शीशा से नीचे किया and he yelled at me. He said, "Get a job, you old hashish bum." तो उसने कहा कि बूढ़े आदमी तुम तो कुछ नौकरी करो। So I had to laugh so much that he said that. I mean, we are not taking any hashish, any bum, but he has very little understanding. तो उस आदमी को तो भक्त क्या होता है, भक्ति क्या होती है, कुछ पता ही नहीं था। Get a job, you old hash bum, So in the same way, they cannot understand. What is this Vaishnavya Kriya Mudra? That ordinary people cannot understand Vaishnava. तो सामान्य व्यक्ति वैष्णव क्रिया मुद्रा यानी वैष्णव का आचार व्यवहार नहीं समझ पाते। What to speak of understanding Krishna? तो भगवान का तो व्यवहार समझना कितना कठिन होगा। What to speak even to understand the soul? आत्मा भी वो समझ नहीं पाते। There's no understanding outside of Vedic culture. There's no understanding of soul. तो वैदिक समाज के बाहर तो आत्मा के बारे में कोई समझ नहीं। Christians, Muslims, Jews believe there's only one life. तो यहूदी जो है और ईसाई है और इस्लाम है उसमें तो यही मानते हैं कि एक ही जीवन मिला है। The soul has a beginning. तो सोल आत्मा की एक शुरुआत है And the soul has an end. और वो एक अंत भी हो जाता है। So who's your father? तो आपके पिता कौन है? What do they say? तो वो क्या कहते हैं? In university, ask your Christian friend, who's your father? तो आप जाकर पूछे My father is Mr. Mukherjee or Mr. Chatterjee or Mr. Patel. तो आप अपने पिताजी का नाम बोलेंगे। But that's not true. Krishna says, Aham Bija Pradapita, I'm the father of all creatures. And never was a time that I did not exist, nor you, nor all these living beings, nor will there be a time that you will cease to be. So we are souls. We always have been. Think about that. We have been there for millions and trillions and trillions and trillions and trillions. There is no beginning. We always have been. It's such a fascinating idea. We have no beginning. We have no end. It's such an enlightening idea. But because we have a temporary body that has a beginning and end, therefore we cannot understand eternity. Our consciousness is conditioned by beginning and end. Therefore we cannot understand the soul. By investigation, by speculation, by material understanding, we cannot understand the soul. Just as Krishna says, for the soul, some look at the soul as amazing, some describe him as amazing, some think of him as amazing, and others can't understand him. तो कई लोग आत्मा को है आश्चर्य के साथ देखते हैं, आश्चर्य के साथ सुनते हैं या सुनने के बाद भी कुछ समझ नहीं पाते। Materialistic people cannot understand the soul. आप बहुत ही बड़े व्यक्ति कभी भी आत्मा को समझ नहीं सकते। They think the soul does not exist. तो वो देखने की आत्मा की शुरुआत है। There was one devotee, his name is Manidhara. He is a book distributor, a good friend of mine, in the beginning since 1972. And he was distributing books and he had a hole in his tooth. It was painful. तो एक मणिधर प्रभु है, 1972 की बात 1972 की बात है, वो पोषक वितरण करते थे और उनके दांत में एक छेद था। In this tooth, front tooth. सामने वाले दांत में वो छेद था। So we went to a doctor और वो एक डॉक्टर के पास गए to fix it. और दांत को ठीक करवाने के लिए। And the doctor was a demon. तो जो डॉक्टर थे वो एक आसुरिक व्यक्ति थे। I said, now you're here, Hare Krishna. What is your philosophy? कहा कि तुम हरे कृष्ण वाले हो, आप बताओ तुम क्या सिद्धांत है तुम्हारा? Manidhara said, we are eternal. तो
कहा कि हम है शाश्वत है। The doctor said there's no such a thing. तो डॉक्टर ने कहा नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं। When the body is finished, everything is finished. कि जब शरीर नाश हो जाता है सब कुछ समाप्त हो जाता है। So Manidhara said, yes, the body is finished, it's true. तो मणिधर प्रभु ने कहा कि हाँ शरीर खत्म हो जाता है। But the soul goes on forever. पर जो आत्मा है वो हमेशा बना रहता है। The man said, there's no such thing like soul. तो उस डॉक्टर ने कहा कि ऐसा आत्मा जैसी कोई वस्तु होती नहीं। Yes, there is, Manidhara said. मणिधर प्रभु ने कहा हाँ होता है। Said, no, I don't believe in the soul, there is no soul. मैं नहीं मानता हूँ आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। So they got involved in an argument. तो एक उनके बीच में वाद हो गया। So the doctor became so angry, he had big spectacles on his nose, he took a plier, you know, and he took grabbed the tooth. He said, the soul does not exist, and pulled his tooth out. It was perfect. He was such a demon. He pulled his perfectly healthy tooth out of his mouth because he was such a demon. तो उन्होंने एक पकड़ लिया और उनके दांत जो था उसको पकड़कर बाहर निकाल दिया। And Manidhara laughed. It was painful. I mean, he pulled this off, he laughed. The blood fell into the doctor's face. तो मणिधर प्रभु हंसने लगे तो खून है उन डॉक्टर के चेहरे पर गिरा। So people, some people are so demonic that they don't agree that there's God. तो ऐसे कई आसुरी लोग होते हैं कि कभी भगवान में नहीं मानते। And their soul. आत्मा में भी नहीं मानते। They're so envious. ये बहुत लोग ईर्ष्या लोग हैं। Such enviousness of God. तो ईर्ष्या लोग यही होते हैं। Consequently, because of envy, they cannot see. तो ईर्ष्या के कारण ही वो देख नहीं सकते। Krishna says, only you can see me, he says to Arjuna, because you're my devotee and my friend, and only therefore you can enter into the mysteries of my understanding. तो क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो इसलिए तुम समझ सकते हो इस रहस्य को, अन्यथा नहीं। So if we're not the friends of God, God will not show himself. तो जब तक हम भगवान के मित्र नहीं बनते तब तक भगवान अपने आप को नहीं We see only very little. तो हमें थोड़ा ही दिखाई देगा। Prabhupada, when he left the body, yesterday we were talking about this, that I said, when Prabhupada wanted medicine, he asked, you remember that? He asked, did you close the bottle? तो Prabhupada asked his servant, did you close the bottle when he got medicine? हाँ तो प्रभुपाद का जब एक बार दवाई मंगाई तो फिर पूछा कि क्या बोतल बंद कर दिया? Remember that? All of you remember that? Yesterday we talked कल about it. हमने प्रवचन में बात किया था। Huh? Okay. So then he said, you know how to open bottles, you don't know how to close them. तो मतलब पता नहीं था उनको कि कैसे बंद करनी पड़ती। You start so many new things and you don't see the consequences. You start so many new things, but you don't see the consequences. तो हम कई नई वस्तुओं की शुरुआत तो करते हैं पर उसके परिणाम क्या है वो हम नहीं जानते। Then Prabhupada said, I forgot to say that yesterday, that's why I bring it up. He said, you know how to live, but you don't know how to die, and therefore I have to show you. तो प्रभुपाद ने कहा कि आप लोग तो जी तो रहे पर आपको पता नहीं कि कैसे शरीर छोड़ना है, तो मैं सिखाऊंगा कैसे शरीर का त्याग करते हैं। And then he called Yaduba to film his death. That's why we have this film, the final lesson. हाँ तो फाइनल लेसन जो है तो प्रभुपाद जी का वीडियो आपने देखा होगा। This house is developed from this discussion. तो ये जो सच्चा से बाद में फिल्म बनाई गई। So how did Prabhupada die? तो प्रभुपाद ने कैसे शरीर का त्याग किया? The last thing that Prabhupada said, minutes before he died, his hand went up, very peaceful, like this. My hand is trembling a little bit. This one doesn't. So his hand went up like this, like a statue. And then he said, everything moving and non-moving, there's nothing but Krishna. This consciousness is called Krishna consciousness. तो उन्होंने अंत में जो वाक्य बोले थे कि हर वस्तु जो चल है अचर है, सब कुछ कृष्ण के कारण कृष्ण ही है। And then ये चेतना है वो कृष्ण चेतना है। little later he said, Hare Krishna, and he had left the body. और अंत में उन्होंने हरे कृष्ण बोला और उन्होंने शरीर का त्याग किया। It was, and we all started crying और हम सब रोने लगे because we lost Srila Prabhupada. क्योंकि हमने प्रभुपाद जी को So this was his consciousness, that he saw everything as Krishna. तो प्रभुपाद जी की यही चेतना थी कि Yomam pashyati savatra savam chamai pashyati
tasyana pranashami sacha mina pranashati. One who sees me everywhere and sees everything in me, I'm never lost to him, nor is he ever lost to me. जो मुझे सब जगह देखता है, सब वस्तु में मुझ में देखता है, वो कभी मुझे भूलता नहीं. In fact, Prabhupada said there is one purport. I have to read this to you. Give me a moment. This is amazing. Where Prabhupada said that a devotee, he's able to even perceive distress as Krishna. तो प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त जो है वो कष्ट को भी भगवान, कष्ट में भी भगवान को देख सकता है. Distress. I have it. I have it. He says, when a devotee is in distress, he sees that the Lord has appeared as distress to relieve or purify the devotee from the contamination of the material world. एक भक्त वो देखता है कि मुझे जो दुख मिल रहा है, तो भगवान ने दुख दिए है कि ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं. Therefore, a devotee sees even the condition of distress as but another feature of God. तो इसलिए भक्त है दुख को भी भगवान का और एक लक्षण के रूप में देखता है. So whatever happens at every moment, it may be happiness, it may be distress, a devotee sees this is Krishna. तो जो भी हो रहा है वो सब में कृष्ण का दर्शन कर सकता है. Imagine I come to you and bring you a huge plate with Mahaprasad. जैसे कि मैं एक महाप्रसाद का बड़ा थाल लेकर आता हूँ. What will you think? तो आप क्या विचार करेंगे? Oh, this is Krishna's mercy. और तो आप विचार करेंगे कृष्ण का प्रसाद है. Imagine you find out that you have cancer. जैसे कि आपको अचानक पता चले कि आपको कैंसर है. 4-stage cancer, and that you will die within 4 months. और आपको बताया गया कि आप 4 महीने में मर जाएंगे. Will you say, oh, this is Krishna's mercy? तो क्या आप कहेंगे कि ये कृष्ण की कृपा है? When people are dying, are they enthusiastic to die? क्या लोग हैं मरने के लिए उत्साही हैं? Everybody said, doctor, help me, get me, I want to live. तो डॉक्टर को बोलेंगे कि डॉक्टर मुझे मदद करो, मैं जीना चाहता हूँ. Nobody materialistically minded is enthusiastic to die. तो भौतिकवादी व्यक्ति कभी भी मरने के लिए तैयार नहीं होता है. But a self-realized soul, Dhiras Tatra Namuyati, is never disturbed, even at the time of death. तो धीर व्यक्ति जो है कभी भी है मोहित नहीं होता है. Because he sees Krishna in everything. और वो कृष्ण में हर वस्तु देख सकते हैं. There's nothing but Krishna, like Prabhupada said. Everything moving, non-moving, nothing but Krishna. He sees, what is that verse? Bahunam janmanam ante jnanavamam prapadati. After many births, one who is wise surrenders unto me, Vasudeva Savamiti, because he sees that I'm everything. तो महात्मा है वो देखता है कि सब कुछ तो वासुदेव ही है. Samahatma Sudurlabha. ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है. Such a great soul is very rare. So devotee sees even that the Lord, in distress, that the Lord has appeared as distress to relieve and purify the devotee from the contamination of material existence. तो भौतिकता के प्रभाव से शुद्ध करने के लिए ही दुख आते हैं. इसी और ये भगवान की कृपा है, ऐसा ही भक्त विचार करता है. A learned devotee, therefore, is not disturbed by distress, but welcomes distress as another form of God's Sarvam Kalv Idam Brahma. तो एक भक्त जो विद्वान है वो जानता है कि जो भी कष्ट आते हैं वो भी एक पहलू है और वो सर्वकल्वेदम ब्रह्म सब कुछ भगवान ही है. Now here comes a sentence that I wanted to read to you. अभी ये वाक्य आ रहा है जिसको मैं पढ़ना चाहता था. Prabhupada writes, and a devotee sees that there's only the Supreme Personality of God and no second entity. तो एक भक्त है वो उसको पूरा विश्वास है कि भगवान ही है और कोई दूसरी वस्तु है नहीं. There's only one living being. और एक ही सत्य है और कोई दूसरा सत्य है. And we are all parts and parcel of that one living being. और हम वो जो परम सत्य है उसी के अंश हैं. Ekam evadivitiyam. There's only the Lord
who presents himself in different energies. तो एक ही परम सत्य है, वो अपने आप को विभिन्न शक्तियों के रूप में प्रकाशित करते हैं। My dear devotees, it is such an amazing concept. There's only one living being. ये बहुत ही आश्चर्यकारक है विचार है। एक ही I never heard this in church. एक ही सत्य है, ऐसा मैंने चर्च में कभी नहीं सुना। In the ultimate analysis, there's only one living entity. तो अल्टीमेट जो परम सत्य है वो एक परम सत्य है, namely the Supreme Personality. There's nothing else. वही परम सत्य है, परम पुरुषोत्तम। He is the earth, He is the sky, He is the water, He is everywhere. He's in everything. Anantarasa paramanu triyantarastam. He's even in the atom. तो वो सब कुछ है, वो अणु में भी है, परमाणु में भी है। There's nothing but Krishna. तो उनके अलावा कुछ है ही नहीं। And so, yato yamitato nishingo. That Prahlad, you could see there's nothing but, wherever he would go, you would see Lord Nrsingadev. इसलिए प्रहलाद महाराज जहाँ भी देखते थे, वहाँ नरसिंहदेव को देखते थे। Bahiya Nrsingo, Hridaye Nrsingo. He saw Lord Nrsingadev inside, he saw Lord Nrsingadev outside. तो नरसिंह भगवान हृदय के अंदर भी है, बाहर भी है। And we are completely protected. Even the demons are protected by God. Even the demons, everybody is protected by God, even the demons. तो जो असुर है वहाँ पर भी सब में भगवान है। Everybody can suffer only his own karma, no more, no less. तो सब लोग अपने कर्म का ही भोग कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा भी नहीं, कुछ कम भी नहीं। If you do something bad, you get the wrath. तो आप जैसा कर्म करेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। If you turn to Krishna, you're fine. अगर आप कृष्ण की ओर मुड़ते हैं तो ठीक है। If you don't turn to Krishna, he's going to beat you up. तो अगर आप कृष्ण की ओर नहीं मुड़ते हैं तो कोई By the laws of material nature. प्रकृति के नियमों के द्वारा आपको पीटा जाएगा। So, intelligent is to turn to Krishna. और वो कहेंगे कि तुम कृष्ण की ओर मुड़ो। Even if he's most sinful of all living entities, if we turn to Krishna, Sarva Dhaman Prinjajam Amikam Saranam Braja Aham Tvam Sava Papi. I free you from all sinful reactions. Do not worry about it. तो अगर कोई बहुत बड़ा पापी भी है तो वो भगवान की शरणागति ले लेता है तो भगवान उनको सब पापों से मुक्त कर देते हैं। Just turn to me and I will take all your sinful reactions away. मेरी ओर मुड़ो और मैं तुम्हारे सब पाप ले लूँगा। That is Krishna. तो यही शरणागति है। You see, if you can understand that, then we are in a very fortunate position. तो ये समझने के लिए व्यक्ति को बहुत सौभाग्य होना चाहिए। Those who understand Krishna consciousness are in a very fortunate position. तो जिन्होंने भी कृष्ण भक्ति को समझा है बहुत ही भाग्यशाली हैं। They live a life with Krishna. तो कृष्ण के लिए वो जीवन जीते हैं। Now and in future in this world. अभी और भविष्य में कृष्ण के लिए जिएंगे। So, I'm sorry I got a little bit away from the lecture. I got a little sidetracked. The fact is that, interestingly enough, that when Bhumi goes to Brahma, she goes to Meru mountain, and that Brahma is different from the Brahma in Satyaloka. I was not aware of it, and I don't know how that actually works. Do you know that? I have to check. Huh? I have to check. You have to guess. I have to check. Come on, guess. Let's hear it. तो बस जो एक तात्पर्य का मैंने पढ़ा उसका आश्चर्य हो रहा था कि एक मेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा है और सत्यलोक के जो ब्रह्मा है वो दोनों भिन्न हैं। So what is your suggestion? What is it? Is it an extension of Brahma or what is that Brahma? Let me read it. Huh? Let me go through it. Huh? Let me go through it. Let me also read the section. Yeah. We have to study this. Sorry. Everything is very clear. If there's something we don't understand, we just have to find out. And of course, we can ask some devotees. You know, there's always an answer. If you can't get an answer from this devotee, you have to go to another devotee. अगर आप इसे उत्तर नहीं मिलता तो दूसरे भक्त से पूछेंगे। There's an answer for everything. सबका प्रश्न का जवाब होता है। Like one time, there's a prayer to Lord Balaram, for example. What is that prayer? प्रार्थना है। Great prayer. बहुत We all should learn this prayer. Kamatsadalakshatu denu kadi. O killer of Dinukasura, please kill my karma, my lust. तो ये बलराम जी की प्रार्थना है कि धनुकासुर के अंता आप मेरे हृदय में काम है उसको खत्म कर दीजिए। You have Lord Balaram here on the altar.
You can go. Kamatsara Kshatrika Krodasaramam Dvividha Prahari, O killer of Dvivida gorilla, kill my Krodha, my anger. तो आप द्विविद का वध किया है तो आप मेरे क्रोध का भी वध कीजिए. What's the other one? Lust, anger, and greed, it says in Bhagavad Gita, 3 gates to hell. Lobatsara Kshatu Dinuka, O killer, no, Lobatsara Kshatu, Kamatsara Kshatu Nikari, Kuratsavan, Lobatsara Balvalaria, O killer of Balvala, please kill my Lobha, my greed. And then it says, the last part of the sloka is that Muhatsaramam Kila Magadari, O killer of Magadha, of the king of Magadha, please kill my illusion. Kill my illusion. Illusion. तो मागध को मारने वाले हैं मेरा भ्रम है मोह है उसको भी आप दूर कर दीजिए. Very nice prayer. You all should learn this prayer. I recite this prayer since years. Kamatsara Kshatu Nikari, Krodatsara Madhurudha Prahari, Lobatsara Kshatu Balvalari, Mohatsara Makila Magadari. एक बहुत अच्छी प्रार्थना है मैं रोज करता हूँ कई सालों से. My dear Lord Balaram, kill my lust, my anger, my greed, my illusion. Very nice prayer. बहुत सुंदर प्रार्थना. Now, in the last it says, who is that? Kila Magadari. Who is that king of Magadha? Magad Naresh. Magadha is Bihar. Who is living in Bihar? It is Jarasandha. Jarasandha. Jarasandha, there was a king, I forgot his name, he had 2 beautiful queens, they were twins, very beautiful. He was very attached to his queens, but he couldn't have a child. So he prayed to one sadhu. Please arrange for me, I want to have a child. The sadhu sat down and prayed. And from heaven a mango fell into his lap. So he gave this mango to the king and said, you will have a boy. The king didn't know what to do with one mango, so he cut the mango into 2 and gave, because he loved every wife equally, and gave every one of these wives a piece of this mango. So a son was born in 2 pieces. Jarasandha was born in 2 pieces. The people heard about it, that the queens had a miscarriage. They were horrified. Threw the piece of meat into the forest. So one demon came, demoness, her name was Jara. And she smelled, oh, there's this wonderful human flesh somewhere. Oh, where is it? And she found the 2 pieces. She found these 2 pieces and she washed it ready to throw it into the wok with hot oil. To eat them. To her surprise, the 2 pieces moved towards it and the child started crying. It became one child. So Jara became overwhelmed with love, motherly love. And she understood this must be the miscarriages of the queens. The king was so happy that he had a son. And he called his son, because Jara puts these 2 pieces together, Jarasandha. So Jarasandha was born. So Jarasandha, he had 2 daughters. And Kamsa, who was very interested to increase his influence, he married these 2 daughters of Jarasandha to increase his power.
तो कंस ने भी जरासंध की 2 पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया ताकि उसका बल उसको प्राप्त हो This जाए। is called a matrimonial, what is it called? Huh? मैट्रिमोनियल अलायंस, Huh? तो वैवाहिक ऐसी संधि की जाती है राजाओं के द्वारा। So they became the wives of Jarasandha, of Kamsa. So when Krishna killed Kamsa, तो कृष्ण ने जब दोनों मतलब कंस को मार दिया, the 2 daughters came back to the father दोनों पुत्री आई जरासंध के पास and cried, he has ruined our life, they killed our husband. कहा कि कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया है। Then Jarasandha vowed, he said, I will eradicate not only Krishna, the whole Yadu race from the earth, from तो planet. जरासंध ने तब प्रतिज्ञा की कि मैं सिर्फ कृष्ण बलराम नहीं पर पूरे यादवों को खत्म कर दूंगा। So this is how that actually worked. तो ये पूरा उसका इतिहास है। There's so many stories like that. तो उस प्रकार से बता है। I never put these 2 pieces together, how this worked out. It's the Kila Magadaris, Jarasandha, and how this whole story worked out. How did I find out? How did I find out? तो कैसे मैं जान सकता हूँ इस बारे में? You want to know? Google knows everything. Google. गूगल से मुझे पता है। You Google it and you find out everything on the internet. So thank you very much. Hare Krishna, our time is over. Do you have any questions? तो प्रश्न है तो बताइए। Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम हरे राम। Hare Krishna, Krishna Krishna